What news, Hunwald? We've learned that Eivor rode for the fort at ANECASTRE following the massacre. I have assembled a field there. Quite a large one, in fact. They eagerly await your orders, Eivor. You mean your orders, Elderman? Ah, yes, that's right. My orders. Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp and we'll find out together. Eivor was a friend of my father's and always so dear to me. I don't understand what possessed him. He invoked the name of an ancient order before his men attacked. I know exactly what possessed him. Do you? It's not a story for now. This will send waves of disgust through all the parishes of Mercia. Eivor is a new and ugly stain on the bishopric. Your Christ was an interesting man, if a little soft. But stranger still, I've met so few Christians like him. Today has been a boon, Eivor. In spite of everything, I now know my father's spirit still burns within me. It's thanks to you I know this. When songs are sung of the day Lincolnshire was saved, your name will ripple through every stanza. Don't be hasty, Hunwald. One verse of our song remains unsung. The din of battle beckons. You pagans and your appetite for battle. I certainly don't share it. I worry what diabolical feast the bishop has in store. Don't let that poxy bishop worry you. With Eivor beside us, he'll be victuals before long. How has Atcha taken all this? She and Eivor were so close. She must feel as though the devil himself attacked her monastery. The poor lady. We spoke briefly. Her spirits were low, but her work carried on. I think she'll be fine. Manipulated by a man who should be God's gladdener. We are the men of Lincolnshire! Remember it! My ancestors fought with the old kings of Lindsey. ओके यार सो For their memory we जो fight हेरेफ्रीथ today. है जो बिशप था उसको पेलने का टाइम आ गया। वो एक्चुअली जो एंसेंट ऑर्डर है उसका एक मेंबर भी है और इसके अलावा गुनहगार भी है जो कत्लेआम हुआ है लिंकन में उसका। सो यार यहाँ पे अभी हम उसका जो कास्टल है उसके आसपास में है और जो हुनवाल्ड है उसका कैंप यहाँ पे डला हुआ है। सो इससे बातचीत करते हैं जो कैप्टन है इससे और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। Our warsmith has arrived. The Feards are ready to fight. Chieftain Eivor, can we win this fight with the men you see assembled here? If they fight with the bravery of double their number, we may. And is there room in your Valhalla for a ferocious swan? Of course. Let fly your glorious banner. Are we ready then? We attack now. Ready the field. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. ओके यार सो एंसेस्टर असोल्ट अभी शुरू होने वाला है। यहाँ पे अपने The पास best में way to breach is with a battering ram. जितना भी जो I should पॉसिबल help it बंदे along. हैं उनके साथ में मिलके हम ये करने वाले हैं। ठीक है एक मिनट गेट यार हमें खोलना पड़ेगा। नहीं वहां तक पहुंच नहीं है। कम ऑन एक मिनट कुछ कर सकते हैं क्या इनका? ये ठीक है ना, इधर से ऊपर चढ़ सकते हैं और ये जितने भी बंदे हैं इनको गेट खोलना है ना यार। बंदे अपने डाउन हो रहे हैं। Come on! डन।
जस्ट ए मिनट यार, जस्ट ए मिनट। रियली डन। अभी दिखाते हैं इनको कत्लेआम। आजा। डन। इजी। Need to find a way past that palisade. An explosion could do it. Or I can try ओके, hitting it. एक्सप्लोजन तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। गेट बंद है। एक मिनट, एक मिनट। डन। चलो यार, फिर थोड़ा सा वेट करके आग बुझने दो। अभी आगे बढ़ो। इजी। इस तरफ आगे बढ़ना है ना। डन। एक मिनट, अपन ऊपर चल सकते हैं ना? हाँ ठीक है। चलो। A challenge at ओ तेरी, last. रियली? अभी दिखाते हैं जिगर जुराट को। सब कुछ जला देंगे यहाँ पे। एक मिनट, अपने को यह खोला है ना पहले। इजी इजी इजी। ठीक है, एमओ है पूरा। डन। गेट खुल गया। Gods! Hereford has gone mad! You, point me to the bishop. No one else need die today. He's in the chapel there, hiding away. Scabrous coward. Let no one leave that church without facing judgment. वो किसो चर्च के अंदर है बंदा। ठीक है। आना फिर। एक मिनट, ये Jammed. Need to get on the other side. चला जाम है ना लो। एक मिनट, एक मिनट। और इस तक पहुंचने का क्या रास्ता होगा? प्रोबेबल अंदर चलेंगे वो ठीक है। फिर तो हर एक रास्ता जाम होगा ना। The other side must be barred. नो प्रॉब्लम। ऊपर की तरफ चल के देखते हैं थोड़ा। जल्दी।
एक मिनट, अपने को किधर से मिल सकता है इसके अंदर घुसने का? नहीं, इजी। यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट, अगर ऊपर कुछ हो तो ऊपर से भी कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं बनेगी ना बात, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अंदर की तरफ जो जाम है ना, लेकिन यहां से बात नहीं बनेगी ना यार। इस तरफ से कोई रास्ता चाहिए अपने को। एक मिनट, उस तरफ अभी खुल गया है मेरे हिसाब से। कोई रास्ता तो खुला था। आई डोंट नो कि किस तरफ का खुला है, बट एक रास्ता जरूर खुला है। तो वो ये हो सकता है ना। हाँ, ये रास्ता खुल गया ना अभी। So respite, Lord, please. Our battle is lost. अभी आजा। Facem Winterfelium et ambulato per yoga. Now I'm ready. Et humili. बहुत हुआ। Itaque motorumque Christi fidelium explentes. Sinistra tristis terram atque. Then easy। एक मिनट, आगे की तरफ ना। अभी तो कीज ढूंढनी है अपने को। ओके, अभी तो नीचे चलना है यार, कीज ही नहीं। देख लो साले ने मतलब क्या बनाया हुआ है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ओके। बंदे ने एक अलग दुनिया बिछा रखी है नीचे जमीन में। तरफ चलना है ना, लेकिन चलना इसी तरफ से। ये रहा। हाँ जी, अब बोलो, हो जाए फिर। डन। I died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as the ancients did. That's the folly of mankind, Aelfred. We wallow in our failures, like happy pigs in a sty of shit. You should have learned to enjoy it. ओके यार, सो अपना जो असोल्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। You won't be waking.
Let's kill a badger and ask Odin for a race. ओके सो जो बंदा था एंशिएंट ऑर्डर का मेंबर उसको पेल दिया है एंड अभी टाइम है अभी चल के हुनवार से बातचीत करते हैं यहाँ के नए एल्डरमैन से Eivor, is the bishop dead? He bled too little and talked too much. Now he's gone. I won't miss him. But Atcha will need some time to grieve. You fought well, ferocious swan. Notched a few scars in your baby fat today. Yes, but they will heal. And stronger than before. Lincolnshire is yours to lead, Alderman. The hardest fight begins now. The din of battle still rings in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Good. I would ask a favor, if I could. Name it. As Elderman, my life may be a dangerous one. For a time, anyway. Would you allow my Swanborough to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. We'd be happy to have her. Thank you, my sturdy Norse berserker. The mead halls of my shire will be lonely without you stomping about. Our people are bonded now. We must look out for one another. Blast it. I am a horror with goodbyes. It'll do for now. Now it seems the wind calls me back to Randi. Best tell her the good news. ओ कह रहा सो अपना जो काम हम करने थे लिंकन शायर में वो हो गया है एक्सीडेंटली हो या कैसे भी हो और अपना जो सागा था ले ऑफ अनवर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारी अलायंस है वो यहाँ पे पक्की हो गई अब सो यारा अभी टाइम है कि हम वापस से चलेंगे और अपने रावंस थोप में चलेंगे और चल के रानवी को रिपोर्ट करेंगे यह सब जो भी यहाँ पे हुआ है एंड अपनी जो अलायंस है उसके बारे में खुशखबरी देंगे सो यार बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने रावंस थोप में और चल के खुशखबरी देते हैं रानवी को लेट्स हेड देयर ओके यार एक बार फिर से आ गए हम अपने रावंस थोप में और अभी चलते हैं और रानवी को खुशखबरी देते हैं Hey there, how are you? It was not rubbish. I intended to use it. Please, calm down. यहाँ पे क्या हो रहा है? Ranvi, what is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for this. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You'll state your cases and I'll hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Gudrun, you may speak. I have been robbed, Eivor. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrolls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For silver with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it?
I ask only that I be paid for the property that was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. ओके, सो जो होल्गर है इसने इसके कुछ कपड़े हैं जो जब सेल करने जाते थे वो चुराए हैं और ये बंदा रिफ्यूज कर रहा है इसको उसके बदले में सिल्वर देने को और उसने वो कपड़े खराब कर दिए और उस पर लिख दिया कुछ भी. सो अभी इसकी डिफेंस देखते हैं यार. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see, as a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something, and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. All right. I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet. Let me speak. ओके यार, सो ये बंदी इस पे इल्जाम लगा रही है और ये बोल रहा कि इसको वो मड में मिले थे जो बिल्कुल से फेंके हुए कपड़े थे वैसे. सो लगता है कि होल्गर यहाँ पे ठीक है बिकॉज बंदी ने वो कपड़े फेंक दिए थे, इसने वापस से उनको लिया है और वापस से ठीक ठाक करके फिर उनका यूज किया. सो आई गेस कि होल्गर इज राइट. After careful thought, it is clear that... What is this? What are you doing? Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. Okay. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest 30 times! In silver! That is my judgment. Eivor, please. Does this not seem unfair? एक्चुअली यार गलत कर रहा है क्योंकि 30 टाइम्स कोई मतलब नहीं होता है. एक्चुअली वो बंदा वैसे भी बर्बाद हो जाएगा. तो या तो वो यहाँ पे पेनल्टी भरेगा, नहीं भरेगा तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आउटकास्ट कर दिया जाएगा. सो जजमेंट तो अनफेयर है इसका सिगर्ड का. लेकिन अगर हमने इसके जजमेंट को अगर अनफेयर किया तो वही है ना, फिर बंदा प्लीज्ड नहीं होगा और ऑलरेडी वो वैसे भी उखड़ा हुआ है कुछ अलग सा है. सो यहाँ पे देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा. Sigurd is our Jarl. His word is law, whether or not you agree. You see? Of course, my Jarl. As it must be. Forgive my defiance. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. जरूर. Should the need arise again, do not fail to rouse me.
ओके सो क्वेस्ट थी एंड क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। सिगर्ड ने इंटरवीन किया। ठीक है, रांडवी ने बोला था कि वो रेडी नहीं है बाहर आने को और सुनने को, लेकिन कोई इशू नहीं किया तो गलत है उसने। चलो अभी चलते हैं और रांडवी को बताते हैं फिर वो सब वापस से। I want to thank you for your judgment, Eivor, for stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you have seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid, but nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We are his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. Lincolnshire is a friend to us. Wonderful news. And who is our ally there? The boy Hunwald is the new alderman of Lincolnshire, and he has sworn allegiance to us. The loud one, an alderman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. ओके यार, तो लिंकनशायर में भी अब अपना जो रेवन है वो बैठ गया है। इट्स अमेजिंग। ओके सो अभी अपनी आगे की जर्नी के लिए देखते हैं, रांडवी से कुछ बातचीत करते हैं आगे के लिए और अपनी नेक्स्ट प्लेस देखते हैं फिर। I want to see the alliance map. ओके सो लिंकनशायर में अपना जो रेवन है वो बैठने के बाद अभी योरविक 190 एंड नॉटिंघमशायर 250, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ओके ओके ओके। एंड इस तरफ ग्लोवेस्टर 220। सो अपना जो अभी ओके विनलैंड यहाँ पे एंड वी आर एलिजिबल फॉर इट ना, इट्स 160। ओके सो एक मिनट, पहले आई गेस कि जब लिंकनशायर आ गए तो लिंकनशायर से आगे योरविक है, मतलब बिल्कुल से पास में है, तो पहले योरविक के बारे में कंसल्ट करके देखते हैं। Tell me about Jorvik. Hytham says there are 3 more targets there. If that is true, you are in luck. Our old friends Jor and Ljuvina have made their homes in Jorvik. Both had status and influence in Norway, so they may have valuable insights into the city's politics. That will make my work easier. What say you then? तो ये यार योरविक में ऑलरेडी अपने कुछ दोस्त हैं, वो हैं वहाँ पे। सो योरविक को प्लेस कर लेते हैं बिकॉज बहुत आसानी हो जाएगी। और अभी हम उस तरफ बढ़ भी चुके हैं, सो लेट्स प्लेस इट बेबी। I'll go now. Do you know where I might find Jor and Ljuvina? When entering a new city, it is best to ask around the ports. The people there know more than the average peasant. ओके सो नई क्वेस्ट है वो अपने को मिल गई है और योरविक को हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। सो न्यू क्वेस्ट अपनी द वेलकमिंग पार्टी, अभी अपने को चलना है योरविक में और वहाँ पे चल के अपने जो 2 दोस्त हैं उनको ढूंढना है। उनसे ढूंढेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे अपनी जो काफ़ी हेल्प है वो हो जाएगी। ओके दैट्स अमेजिंग। सो यार इट्स टाइम नाउ टू लीव एंड निकलते हैं अभी यहाँ से योरविक के लिए एंड मिलते हैं फिर वहीं पे योरविक में एक और नए एडवेंचर पे। लेट्स हेड बेबी। ओके सो भी योरविक हम एंटर कर रहे हैं और हमें यहाँ पे डॉक्स तक पहुँचना है। उसके बाद देखते हैं आगे चल के किस तरफ से, इसी तरफ चलना ना। ठीक है, अभी नई जगह है, एक नया एडवेंचर होगा, नई मुसीबतें होंगी और नए सॉल्यूशंस होंगे। The Order of Ancients lurk in its streets and alleys. My old friends Jor and Ljuvina live here. ओके सो नया सागा है द सिटी ऑफ ग्रीड। Pull up here. ठीक है। Jor and Ljuvina settled near this harbor. Someone should know where to find them. ओके सो जो 2 दोस्त हैं जिनके बारे में हमने बातचीत करी थी। वाह सच ए ब्यूटीफुल सिटी यार। सो जैसे लंदन था वैसे ही योरविक है, वैसे ही एक सिटी है और
यहाँ पे अपने जो 2 दोस्त हैं उनको ढूंढना है, और उनको ढूंढने के लिए हम इधर उधर किसी से पूछताछ करके ही पता कर सकते हैं। सो डॉक के अराउंड किसी को पूछते हैं, अगर कोई बंदा जानता हो। ओके, यहाँ पे कोई है तो सही। Hey, friend. Could you help me find some of my people? I'm looking for Hjor and Ljuvina. Hjor? I know him. Are you a friend? I am. Then you will get no help from me, or any of the other merchants for that matter. Now, if you don't mind. Bitter. Has Hjor wronged him somehow? ओके, सो इस बंदे ने तो हेल्प नहीं करी है। इस तरफ कोई है। Little one, can you help me? I am looking for some friends. Do the names Hjor and Ljuvina mean anything to you? I think I know that name. A woman. She's from Bjarmiland. Very smart. She sounded funny, so I asked her once. Hope it wasn't rude of me. You want to speak to the dockmaster, Grigory. I've seen him talking with her before. My thanks. ओके, डॉक मास्टर से। तो यार यहाँ पे मतलब डॉक मास्टर किधर मिलेगा? I am looking for some friends. Been told to ask around this harbor. Ljuvina and Hjor. Oh, sure, I know plenty. Of that I'm certain. क्या किया तो कुछ अलग ही नशे में है। एक मिनट, अब जब यार नई सिटी में आए हैं, सो मिनट यहाँ पे है ना बंदे तो सामने। ठीक है, क्लॉक करते ना। ओके बेबी। What about me? What about my wares? You can have your wares So back trade when you depot. pay the docking tax. Okay. Move along now. We ran a clean dock in Jorvik. तो ये है क्या यहाँ का डॉकमैन? You must be the dockmaster. What gave it away? Everyone hates you. As I just explained to your friend there, if your wares have been seized, take it up with the council. These merchants are not my friends, but I'm looking for some. Hjor and Ljuvina. You know Hjor and Ljuvina? What business do you have with them? We know each other from Norway. Bid farewell to that land, but not to old friends. You may be glad to hear they fare quite well in Jorvik. It does not surprise me. They're driven, and so am I. Now I would like to see them again. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Ljuvina live. How about some coin for my trouble? How about I cut out your tongue? Forget I said anything. A manor. Hjor and Ljuvina have done well for themselves. ओके, सो जब हम नॉर्वे से इंग्लैंड आए थे तो अपने जो दोस्त थे बाकी हम लोग अलग अलग जगह पे चले गए थे ताकि हम चारों तरफ से जो जानकारी है वो जुटा सकें और अल्टीमेटली एक साथ में हम स्टार्ट कर सकें। तो अभी उन्होंने यहाँ पे आके अच्छा काम किया बंदों ने। और योरविक देख रहे हो, ब्यूटीफुल सिटी यार। सो इसका घर तो यहीं कहीं पे होना चाहिए ना। Show me what lies ahead. किस तरफ? ओके, यहाँ पे आना अपने को ना। यही इसका घर है। ओके बेबी। एक मिनट, यहाँ पे कुछ फ्लावर से गिरा हुआ होगा जो उसका घर होगा। एक मिनट। Stretch your wings, Sunan. अभी हम है कहाँ पे? अभी हम है यहाँ पे, तो वो घर है वहाँ पे। हम पीछे की तरफ छोड़ के आए क्या यार? जो सिटी मतलब ये जिस तरीके से है ना, मतलब इतना आसान नहीं है यहाँ पे सब कुछ। ये लंदन से भी ज़्यादा मतलब डेंस है।
ओके, ये वाला होना चाहिए। This is their home. Consular house. The place has been ransacked, and this body, it's not your Olufna. वो तेरी तो, यहाँ पे तो कुछ और ही सीन हो रखा है यार। इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को। Scattered scrolls. The thief was looking for something. ओके। वाओ। यहाँ पे हम कुछ और क्लू ढूंढेंगे अगर अपने को पॉसिबली मिले तो। There was a struggle here. Looks like it continued outside. हाँ, यहाँ पे स्ट्रगल किया है बंदे ने। ये देख लो, मतलब ब्लड सेट्स हैं और इस तरफ निकले हैं फिर। ठीक है। ओ भाई साहब। Blood, but no body. Which way did they go? यहाँ से किस तरफ निकले होंगे ये लोग? ओके ओके ओके, ये रही ना बॉडी। Is this one of the thieves? The trail continues. ओके, सो इस ट्रेल को फॉलो करते हैं यार, कुछ ना कुछ लीड तो हाथ लगेगी। Who is that? Come closer, now. It's me, Juvina. It's Eivor. Eivor? What? Who sent you? Are you with them? Breathe, Juvina. You're rattled. You know me. I'm a friend. Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. I heard there was trouble in Jorvik. I have only come to help, on my honor. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. It has been a tense few weeks. Who were they? Why were they after you? They were after this. I do not know what it is, but these men were ready to kill me for it. Okay. A poor fellow soldier of Christ. You know him? I've seen a little like this before, in London. This city is in great danger. Where is Yor? At the Royal Hall. I will take you there. ओके है रसो, यहाँ पे भी बहुत सारे जो एंशिएंट ऑर्डर के मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे लंदन में थे। ठीक है, हाकिम से हमने बात करी थी तो उसने तो हमें यही बताया था कि यहाँ पे भी 3-4 मेंबर्स होंगे। 3-4 क्या, 2-3 तो कम से कम होंगे। Hide low. We can slip past them. ओके। बस क्या के सामने देख रहे हो लड़ाके। ओ इजी। हाँ, ये सही तरीका ना, यहाँ पे बैठ जाते हैं। Really? Well, well. She can't have gotten far. Look around. ओके, सो ये बंदे अभी भी, एक मिनट, इजी। Let's go. अभी भी ढूंढ रहे हैं ना उसको, और वो उनके साथ में चली जा रही है बंदी। इजी गर्ल। एक्चुअली अभी अपने को चलना है रॉयल हॉल तक। और यार यहाँ पे भाग नहीं सकते, क्योंकि भागेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि देख लो चारों तरफ बंदे हैं वो फैले हुए हैं। तो भाई ये साला डाउटफुल क्यों हो रहा है मेरे पे। Have you seen a Bajarmian woman? Answer well if you know what's good for you. I haven't seen her, I swear. ओके, एक बार इस बंदे को इस तरफ निकलने दो, फिर यहाँ से चलते हैं। इजी। Keep an eye out. ओके, यहाँ पे खून खराबा हो उससे पहले थोड़ी सी हमें सिचुएशन है वो समझ में आनी चाहिए। तो बंदी तो भागे जा रही है यार। ओके,
देख लो, मतलब चप्पे चप्पे पे बंदे हैं वो फैले हुए हैं, सो इतना आसान नहीं रहेगा। और हम जहां भी जा रहे हैं बंदे हैं। एक मिनट, पूरे इसको ही ढूंढ रहे हैं लुविना कोई। भैंस के आंख बंदे इनके बीचों बीच घूम रही है। एक मिनट, वो उस तरफ गई ना, उस तरफ चलना है, बट इन दोनों के पास से तो नहीं चल सकते यार। हाँ कल यही दिक्कत है ना। हो गई ना दिक्कत। किस तरफ? Keep your guard up. I'll finish you. To battle. You die now. What's my lead? साला हम पीछे तो नहीं हटेंगे यार अब। बंदी इंजर्ड है। चलो। I do not see any others. Let's keep moving. This way. Okay. एक मिनट, लूट नहीं छोड़नी है ना। चलो अब। सो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे खून खराब हो, लेकिन वो हो ही गया। Eivor, your arrival could not be better timed. Call it fate. I had hoped our paths would cross again, though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. While King Richier is preoccupied with the money shortage, a group called the Red Hand has been imposing their will. The ones who attacked you? Yes and no. They are bandits, but someone is controlling them. Look no further than the names in that letter. Killing them is the reason I'm here. But they are coded. They could belong to anyone. The sludge in the streets often drips from the gutters of the halls. When in doubt, look to those in power. You mean the council? Hjor is on the council. That works in our favor. Someone we can trust to find the answers we seek. Yes, we are nearly there. Okay, so जो एक और अपना जो दोस्त है इसके अलावा वो जो काउंसिल है यहाँ पे, मेन काउंसिल, उसका हिस्सा है और उससे हमें बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, किस तरफ है रॉयल हॉल? सामने यही है क्या? ओके। सो ह्योर यहाँ पे होगा और वो अपनी हेल्प करेगा। ठीक है। It pleases me to see you, old friend. All are welcome here in Jorvik. It is good to find you well, Yor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior, about a rot in your city. Free figures, corrupt and dangerous. We should work together to bring them into the light and kill them before they come to power. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Yor. What? These people send the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret. But they failed. This is the letter that was sent to our home. The needle, the firebrand, the vault. They belong to a group called the Order of Ancients. These are their assumed names, our leads. Listen to her, Yor.
She has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into Jorvik. But King Rici's hands are full, which means my hands are full. Counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the three of us. But you should introduce me to the king. I'll need to align with him if we are to go about this freely. ओके, सो जो बंदे हैं एंशिएंट ऑर्डर के वो अपना नाम बदल के रहते हैं और यहाँ पे हैं तो सही 3 यारा. The Picts are winning this war. We should be scraping together every ounce of silver to procure food for our men. Understood, dear Farafit, but we also have a responsibility to our townspeople. The Yuletide must go on. Enough. The more you argue, the more my head hurts. ऋषि जी यहाँ का किंग है जिससे हम यहाँ पे मिलेंगे और The likes of which I did not approve. हमारे यहाँ पे फ्री घूमने का थोड़ा सा मिलेगा अपने को. King Rishi, I am Eivor of the Raven clan. Well, Eivor of the Raven clan, as you can see, I'm in the middle of something. Hjor, perhaps for lack of better judgment, deems it necessary that you interrupt. Why? You have a problem in Jorvik. Yes, I'm looking at it. A problem that nearly got my friend killed. Juvina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived, but the Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger. Took our old camp by the river Nene, as I hear it. I am Faravid, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reeve of Jorvik. I've seen rebel groups like this before. They sit and wait, and the moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want, not what Halfdan wants. Oh dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand, and I'll rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said. I would rather not be worrying about them come Yuletide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Hjor, send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said, we don't have... Find it. I have spoken. He tells me to find more silver. Where? In a dragon's hoard? Come, I will take you back to Ljufina. She will know where to begin. I cannot tell if that went the way you had hoped. It went well यहाँ पे enough. जो किंग है उसे बातचीत हुई है. Rishi will stay out of my way. No one can argue the Red Hand must be dealt with. Speak a word of this to no one. A circle of trust must stay between the three of us. एंड ये जो मैटर है ये हम तीनों लोगों के बीच में ही रहना चाहिए. वो ठीक है. एक मिनट. रिक्रूट कर सकते हैं. Father favors you, Eivor. I would join in that glory. Raid with me, warrior, for plunder, glory, and Valhalla. Okay. You will forgive me for stepping away. I grow weary of those pissing contests. My love, I am sorry for what happened. I should have been there. Nonsense. You have your duties to fulfill. Besides, a few bandits is hardly something to worry over. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. Once you catch the tail, you do not let go. Old habits die with the struggle. Hjor has changed, softened. Politics. It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for him. You've made something of yourselves here. Perhaps. What do you have there? Christian texts. The Gospels. Ecclesiastes. The Revelation of John. The Red Hand steals all they can find.
We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, Althon is worried they will come for the archives next. Between this and all the uproar at the harbor, I would say we have some leads. ओके यार, सो जो यहाँ पे अभी जो एंशिएंट ऑर्डर के बंदे हैं उन्होंने एक स्पेशल फोर्स लगाई हुई है और उसको जाना जाता है यहाँ पे रेड हैंड के नाम से। वो बंदे चारों तरफ फैले हुए हैं और जो किंग है उसने हमें अलाउ कर दिया कि हम उनको खदेड़ सकते हैं, बट पब्लिक में यह चीज़ जानी नहीं चाहिए, बात अलार्म नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज भगदड़ मच जाएगी। सो यार हमें सीक्रेटली यह काम करना होगा और जो भी एंशिएंट ऑर्डर के मेंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करना होगा। एक्चुअली वो अपने रियल नेम से नहीं रहते हैं, कभी भी नाम बदल के रहते हैं, तो हमें उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन एलिमिनेट करना है। ओके What does the Red Hand want with Christian texts? That is the question. Whatever it is, there is no length they will not go to retrieve them. They have even burned people alive who refuse to hand over what they demand. Where is the largest collection of texts in the city? The archives. But they haven't been so bold as to attack it yet. Althon keeps a close eye on the place. I'll try my luck there. I went by the harbor when I first arrived. The Dogmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. He's been using Jorvik's money shortage to increase taxes. As if he's been ordered to by the council. Jor would never wrong the people like that, even if Rishiate demanded it. The Dogmaster is a thief and a liar. A man in need of a throttling. I'll have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchants' wares. I'll get started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I would swallow a horse heart to join you, Eivor. I know, old friend. Your loyalty is why I need you here. I'll return when I find something. वो कह रहा सो अपनी जो क्वेस्ट है यहाँ पे आने के बाद ये होती है कंप्लीट एंड थोड़ी सी हमें लीड मिली है, थोड़ी सी हमें जानकारी मिली है यहाँ पे योरविक में। ओके और जो एंशिएंट ऑर्डर्स के मेंबर्स हैं उनको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा हमको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ का एनवायरनमेंट देख लो यार, बिल्कुल नॉर्वे के जैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। ओके एंड जो सिटी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बसाई गई है। ठीक है, सो अब अपनी जो कहानी है इसको आगे बढ़ाएंगे, बट अभी इस एपिसोड में इतना ही रखेंगे और अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो ख्याल रखिएगा अपना, जल्द करते हैं मुलाकात एक और अमेजिंग से एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।